So idea is when we are talking about, it's not for related to complete technical things, correct? So I'm also certified what we can say the life coach. So what I can say, to attract anything in your life, right? So some of the things you need to work on it, right? Let me write it here into one of the notepad, correct? So when I'm saying some of the things you need to work on it, right? I will take one of that session on this topic also, right? So first thing is that basically what is the belief level you have, right? Feeling, right? It's then belief, right? Third thing is for thoughts, right? Fourth is the action. So it is a combination of this. If you will see, do anybody heard about the law of attraction? Huh? Anybody heard about it? Yes, yes. So law of Yes. attraction is a proven concept as this law of gravity, right? And you are still using it unconsciously. You see many such times you are getting a call from your friends. You have just thought about it, correct? मतलब समटाइम्स तुमको ऐसा लगेगा कि यार मैं जस्ट सोच ही रहा था कि कॉल करने के लिए, यार सडनली उस बंदे ने कॉल किया, मे बी पेरेंट्स, मे बी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लाइक दैट। ऐसा होता है कि नहीं, करेक्ट? Yes. और भी ऐसे कई सिनारियोज में वो होगा। आई कैन आल्सो टेल यू, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो, ये सिचुएशन आपने 2-3 साल पहले या इसके पहले कभी तो ये सोचा होगा कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब करूंगा, दिस विल बी माई लाइफ स्टाइल, दिस वे आई एम वर्किंग ओवर देयर, यस और नो? यस और Mm. नो? अब Yes. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको आने के बाद में हो सकता है कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट समहाउ यू हैव मैनिफेस्टेड फ्रॉम योर ओन, करेक्ट? अनकॉन्शियसली। अब अनकॉन्शियसली कैसे होता है कि अनकॉन्शियसली इफ यू हैव अ कंप्लीटली फियर, डर, और यू आर टू मच वरीड अबाउट समथिंग, एंजाइटी, ये निगेटिव फीलिंग्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी निगेटिव होती है। तो जब आप कंटिन्यूअसली डर के काम कर रहे हो, राइट, एंजाइटी वरीज के साथ काम कर रहे हो, अरे ऐसा होगा तो कैसे होगा, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, राइट, लोग क्या बोलेंगे, कंपनी क्या सोचेगी, करेक्ट, देयर आर मेनी सच थिंग्स लाइक दैट। तो ये निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट, और उसके कारण बेसिकली निगेटिव फीलिंग्स भी जनरेट हो रही है। सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग एंड अट्रैक्टिंग समथिंग इज नेगेटिव इन योर पर्टिकुलरली इन योर लाइफ। तो you need to control your feeling and you need to control your thoughts basically, correct? So one negative thought will span a multiple negative thoughts, और जो नेगेटिव फीलिंग यदि आपकी है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, स्पेशली देर आर 4 फील्ड्स। तो फील्ड्स के लिए हम बात करेंगे हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, राइट, एंड मनी। यदि किसी भी फील्ड में यदि आपकी निगेटिव फीलिंग्स हैं, आपको मेजरली निगेटिविटी, राइट, आप निगेटिव यदि थॉट्स के साथ काम कर रहे हो, निगेटिव फीलिंग्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको काफी सारे निगेटिविटी एक्सपीरियंस हो सकती है। सेकंड पॉइंट, यदि इन किसी भी फील्ड में आपकी निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी आपके दूसरे भी एरियाज में इम्पैक्ट करेगी। यदि हेल्थ में कुछ नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पे स्प्रेड होगी वो, राइट, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन मनी, मे बी इन कैरियर। तो तो आपको वो निगेटिविटी को केयर करना है बेसिकली, चाहे जिस भी एरिया में, करेक्ट? तो बेसिकली क्या है कि आपके दूसरे एरियाज पे भी वो पॉजिटिविटी इंपैक्ट करेगी। अब फीलिंग्स मतलब आप यदि वरीज की फीलिंग में हैं, आप कंटिन्यूअसली थोड़े डाउन हो, राइट, स्टिल यू आर थिंकिंग। अब उस पर्टिकुलर जब आप डाउन फीलिंग में हो, राइट, अब मैं यदि सुबह से ये सोच रहा हूँ कि ओके ये क्यों नहीं हो पा रहा है, व्हाट आई विल गेट इट इफ आई विल नॉट डू द जॉब, ये सारी, राइट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू क्लियर एन इंटरव्यू, कॉल भी नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, टू मच एंजाइटी, उसकी वजह से आपके थॉट्स भी निगेटिव आ रहे हैं। तो आपको निगेटिव थॉट्स, राइट, मे बी ये हो सकता है, मे बी समथिंग एल्स हैपन हियर, इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गुड एट समथिंग। तो आपका एक बिलीफ, अब ये सारी चीजें जो है ना, ये पर्टिकुलर बिलीफ की वजह से हो रही है। बिलीफ मीन्स
एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसको आपने मल्टीपल रिपीटेटिवली सुना है या एब्जॉर्ब किया है, वो एक इट्स लाइक योर स्टोन। तो वो एक हार्डकोर स्टेटमेंट हो गया है और वो स्टेटमेंट पे आप कंप्लीट बिलीव कर रहे हो। करेक्ट? मतलब मल्टीपल टाइम्स जब आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं या देखी हैं या कुछ और हुआ है ऐसे, तो आपको लग रहा है कि यस, करेक्ट, कि ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होगा। मतलब कुछ पॉजिटिव बिलीफ्स हैं, कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं। तो वो बिलीफ के ऊपर भी हमको काम करना है। करेक्ट? अब यदि ये आपके फर्स्ट 3 पार्ट जो फीलिंग, बिलीफ और थॉट्स यदि आप केयर कर लोगे ना, तो एक्शन में ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये आप यदि देखोगे कि जभी भी आप पॉजिटिव मोड में रहते हो ना, तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आता है। यू विल एन्जॉय द वर्क। एम आई राइट और रॉन्ग? हुँ? येस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. तो जभी भी आप पॉजिटिव मोड में रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि फैमिली में भी सब लोग अच्छे हैं, मेरा दिन भी अच्छा जा रहा है, जॉब में भी सब अच्छा चल रहा है। बट आप जब नेगेटिव मोड में रहते हो, लेट्स से कभी प्रोजेक्ट में बहुत प्रेशर हो गया है, राइट? और यदि आपने उसी समय ये नेगेटिविटी सोच लिया कि यार मैं सब अच्छे से कर रहा हूँ, बट लोग देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ मी ओनली, मेरे ही कोड से सबको प्रॉब्लम हो रही है, पीपल आर अननेसेसरली ब्लेमिंग ऑन मी और पीपल आर अननेसेसरली टारगेटिंग मी or this company is not good, client is not good, these are nothing but your negative feelings और ये नेगेटिव थॉट्स। करेक्ट? और अब आपने उसमें एक नेगेटिव बिलीफ बना लिया है कि यस, कंपनी इज नॉट गुड एट ऑल, राइट? और ये मैनेजर भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है क्योंकि दिस मैनेजर इज बिहेविंग लाइक दैट ओनली, इज कंप्लीटली बायस्ड, राइट? तो आपने एक बिलीफ बना लिया है। अब उस बिलीफ के अकॉर्डिंगली आपने काम करना चालू किया है, तो आपका फोकस कहाँ चला गया? आपका काम इंप्रूव करने की बजाय यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स कि आई एम कंप्लीटली राइट, बट दीज ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड। करेक्ट? तो वो बिलीफ जो है ना वहां पे, वो मेजरली रोल प्ले करता है। करेक्ट? सो ये बिलीफ आपको पहले चेंज करना है और यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से निगेटिव बिलीफ्स हैं जो आपको पुल बैक कर रहे हैं। करेक्ट? जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो निगेटिव बिलीफ्स हमको पहले ट्यून करने हैं। तो उसके अगेंस्ट में आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख लो। इफ द कंपनी इज नॉट गुड, यू राइट इट द कंपनी इज फैंटास्टिक and company is really helping it to me because company is paying salary to me and company has giving a good growth and added a value in my career। ये एक स्टेटमेंट आपको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड विल ट्यून, यस माय मैनेजर इज रियली गुड, बट बिकॉज ऑफ सम क्लाइंट प्रेशर, बिकॉज मैनेजर्स आर आल्सो लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जब आप मैनेजर बनोगे तो आप भी उसी तरीके से बिहेव करोगे जैसा आपका मैनेजर बिहेव कर रहा है, बिकॉज समहाउ यू नीड टू गेट इट डन। तो कुछ मैनेजर्स एग्रेसिवली बात करते हैं, राइट? उनका पेशेंस उतना नहीं होता है तो वो थोड़ा अलग मोड में चले जाते हैं, बट मैनेजर्स आर लाइक दैट बिकॉज जब तक वो प्रेशराइज नहीं करेंगे तब तक टीम काम ही नहीं कर रही। करेक्ट? यदि सब चीजें करेक्ट हो जाती तो मैनेजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। आर यू गाइस एग्री विथ मी और नॉट? Yes. तो मैनेजर्स आर लाइक इट्स ओके, सो मैनेजर्स आर आल्सो पीपल लाइक यू एंड मी, राइट? और जब आप लोग मैनेजर बनोगे तो आप लोग भी यू विल अंडरस्टैंड कि क्या ऐसे होता है, या किसी मैनेजर्स के साथ आप के अच्छे फ्रेंडशिप जैसे रिलेशन है तो उनके साथ आप बात करोगे तो आप देखोगे कि दे आर आल्सो स्पीकिंग वेरी द वे यू स्पीक, द वे आई स्पीक, वो भी वैसे ही बात करते हैं नॉर्मल। बट जब प्रोजेक्ट में काम की बात होती है तो दे आर इनटू डिफरेंट मोड बिकॉज दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दे आर लाइक ए ह्यूमन बीइंग, राइट? उसमें किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं। कभी कभी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप और मे बी किसी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, कौन कैसा बिहेव करता है, थोड़ा सा ऑफिस में ये सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं। करेक्ट? तो वहां पर आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है मैनेजर्स के साथ में। यू शुड बी वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कि भाई मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूँ एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एंड हेल्प and I'm always there with you. Whenever you need it, you just give me a call and I will be there and I will help it to you। करेक्ट? तो ये माइंडसेट आप रखोगे तो मैनेजर को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये बंदा ऑलवेज इज रेडी टू सपोर्ट टू मी एंड रेडी टू सपोर्ट टू अ टीम एंड ऑलवेज अलाइन विथ मी। करेक्ट? इतना कॉन्फिडेंस आपको, आपने यदि मैनेजर को दे दिया और ये विश्वास आपने दिला दिया है, कभी मैनेजर आपको जाने के टाइम पे नहीं पूछेगा कि यार अभी क्यों जा रहा है, राइट? थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक रहा है तू? और वो कभी काम के लिए यदि आपने थोड़ा बहुत काम डिले कर दिया है, यू गिव द कॉन्फिडेंस कि यस आई एम एबल टू डू इट एंड आई विल डिलीवर। करेक्ट?
तो उसके बाद में मैनेजर आपको ये भी नहीं पूछेगा कि नहीं यार काम खत्म ही करके घर जाना, राइट, अदरवाइज डोंट गो होम और समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू कंप्लीट एंड कम एंड समथिंग लाइक दैट, जो नॉर्मली मैनेजर्स बात करते हैं। तो ये चीज यदि आप उसको इतना कॉन्फिडेंस दे दो, मेजरली इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैन गिव द कॉन्फिडेंस टू अ मैनेजर, आई विल डिलीवर वॉट एवर आई एम डूइंग इट, राइट, एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कमिटमेंट भी रखना पड़ेगा, बट ये है कि आप उसको यदि उस तरीके से बात करोगे, आपको कभी मैनेजर्स के साथ चैलेंजेस नहीं आएंगे, राइट। क्योंकि क्या होता है मेजरली एज पर माय एक्सपीरियंस, ये जो प्रेशर बिल्टअप होता है ना, वो हायर मैनेजमेंट से बिल्डअप होता है, राइट। हायर मैनेजमेंट, क्लाइंट से हायर मैनेजमेंट के ऊपर, हायर मैनेजमेंट से फिर मैनेजर लीड के ऊपर, एंड देन दे विल स्पीक विथ यू, यू समहाउ वी नीड टू डिलीवर। तो दे आर ऑल्सो लाइक ए ह्यूमन बीइंग। अब वो किसी अलग सोच के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी भी मैनेजर्स के साथ पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, correct. Some in some cases maybe they are not able to give that incentives or maybe salary hike and things like that, maybe sometimes they are not able to justify the things like that, because every project has that billing and billing code, and they need to justify why you are giving the hikes, why you are giving all this, so many things are there when they do their presence. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो वो आपको प्रोसेस भी पता होनी चाहिए कि आपके मैनेजर की कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं, राइट, लाइक दिस। But always you should go with the positive mindset कि yes, I need to add some value to a company, some value to my team, some values I need to add into a project. यदि इस माइंडसेट के साथ आप डेली वर्क करने जा रहे हो, तो आपका जो बिलीफ ट्यून हो गया है, यू विल हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स फॉर योर टीम, फॉर योर कंपनी एंड फॉर योर वर्क, करेक्ट। क्योंकि यदि नेगेटिव थॉट्स के साथ यदि आप जा रहे हो, यू विल नॉट बी, यू विल स्पेंड टाइम इन कंपनी फॉर 10 आवर 12 आवर्स, बट देर विल नॉट बी एनी एनर्जी एंड देर विल लेस आउटपुट, ठीक है। तो एक यदि वहां पे आप मेजरली अपने को कैरियर को पहले ट्यून करना है, बिकॉज ऑफ कैरियर यू विल हैव सम अदर थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली गेटिंग ट्यून्ड, करेक्ट। यदि जॉब में ही प्रॉब्लम है, तो यू विल सी मेनी सच चैलेंजेस इन अदर एरिया, राइट, करेक्ट नहीं? आर यू गाइस एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले हमें उसको ट्यून करना है। सेकंड थिंग ये है कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल लेवल पर वट एवर हेल्थ यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज यदि पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वो भी टेक केयर करना है हमें, राइट। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज, बिकॉज इफ यू विल डू एक्सरसाइज, देर आर हार्मोन्स आर गेटिंग जनरेटेड, मेजरली दीज हार्मोन्स, राइट। एनीबडी हर्ड अबाउट दैट ऑक्सीटोसिन, राइट, सेरोटिन and dopamine, right? These three hormones are always be giving much more positive energy, relaxations and feel, and there are different pleasure kind of things. तो यदि if you will do a very good exercise like maybe meditations and good exercise, dance, zumba, यदि आप करते हो, तो उससे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यदि if you will see any funny movies, comedy, stand up comedies, you will feel right like this, so because of these hormones. तो यदि एक्सरसाइज इफ यू विल डू एवरी डे, these hormones are getting generated, and because of that you will feel much more pleasure and you will feel fresh, ठीक है, correct. That is one thing. So apart from that, in that relationship, if there are some relationship problems, if you are going through it, right, because of maybe in your team, your managers, or maybe in your wife or husband or something like that, that is you need to tune it, ठीक है। तो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी थोड़ा सा उसको ट्यून करो। गुड थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट द प्रॉब्लम इज, अनदर थिंग इज दैट इज दिस रियली इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइटिंग इट, करेक्ट। मतलब जो भी यदि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम चल रहे हैं, हम नाउ सुदीप इज अलोन, अब आई डोंट नो कि इफ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स अदर, दैट इज डिफरेंट थिंग, आर यू गेटिंग? Yes. So that is a different thing, because if you are struggling with this, you will have some other focus and things like that. So वो relationship के problems जब ज्यादा time तक यदि वो चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके other areas में भी problem आएगा, correct. In the same way, if you are struggling multiple times of related to money, right, तो उसकी वजह से काफी you have some anxiety, worries like that. So generally as a bachelor time में ये problems नहीं होते हैं, but maybe if you have much more responsibility of a family and all this, so then people are thinking much more related to that. तो वो मनी से रिलेटेड भी आपको वो निगेटिविटी थोड़ी क्लियर करनी है। मतलब वॉट एवर मनी यू हैव, यू शुड बी फील हैप्पी एंड यू शुड एंजॉय विथ योर फैमिली, then you will have a much more, don't be always be like feel like lack of money, right,
lack of everything. So you should feel like a satisfied and successful each and every time. So even though if you are not having a job, if you are not having a very good salary, even though if you are not having a good reputed job role or things like that, you should feel like a successful, right? So you should feel like a successful every time, and you should feel like your life is complete and happy. That is his ultimate goal is. So every day you should feel like only one thought, that my life is complete and I'm successful. So in that scenario, you can be always like, when you are thinking in that mode, right, you will not be having a much more anxiety and much more what we can call as, apart from anxiety, what we can say worries, like that, yaar ye kyun nahi hua hai, right, ye karna hai mujhe, right, these are things, still these tasks are not yet completed. It's okay, nobody is perfect here, I can tell you, right? Some of the things you have completed, not completed, because nobody's, even some of the things I prepare in my plan and I have to do some certification, I have not able to do it because of some other things like that, because I postpone things like that, or maybe some other you can say things are coming on the way. So nobody is perfect here, correct? So that is okay. But your success and your happiness, especially your happiness should not attach with your goal. If I will get the job, then only I will be happy. So if somebody, your friend is asking to you, how are you feeling, Sudeep? You always feel, yeah, yes, life is good. I am still doing good, right? And still I'm preparing, but everything will be success. I will get it right. But things are really good, and then I can always available to give a company to you whenever you require or something like that. I can come and I will meet with you, and I can just go for a gossip or playing or things like that. So your happiness should not be attached with the goals, right? You should always feel successful, happy and complete. Then once you, so that is basically is all about your feeling. Another thing, there is a complete you can say session is related how to change your beliefs, right? So for a particular area and for a particular task, let's say for job, or maybe what will be the beliefs, what will be the feelings, what will be the thought and actions. So if you are searching for a job, let's say an example, so what will be your feeling? Let's say how law of attraction works. So basically you start feeling like that you already have it, right? So you start working like that you are already having it. You are already having means, if you have a job, how do you feel, right? So every day you prepare yourself, you will feel like that I have to do this much work, I need to complete it. You will prepare and you will read some document and things like that, so that you can prove or you can complete your job, coding job and assignments. So based on that, what kind of knowledge you required and what are the action you will take it, right? So you should have that kind of a feeling, right? Yes, basically every day if I will go right into an office, right, how do I feel, right? If I will get the salary every month, how do I feel? If I will basically show my card for company card or visiting cards, how do I feel? So that kind of a feeling you start feeling right now. Then you change the belief, right? Belief is like that I already got the job, right? And I am one of the, so what are the beliefs you needed? The belief is basically I am able to clear that interview and I am working as one of the best Java developer. I am a Java expert. So I am a Java expert. Read it and write this statement at least 15 times in a day, right? And repeat this statement and I am a Java expert. So you completely, once you write it at least 21 days, so your mind will be still behaving, you are a Java expert. So it will give some idea how Java expert behaves. Are you getting my point? So you define your identity, you are a Java expert. So you change your feeling, right? How do you feel if you feel like this? If you are working as a one of the best professional as a team, the team, and people are appreciating when you are going to a company, you are doing some work, when you are getting a salary, how your people will appreciate to you. That kind of a feeling you generate. You feel like this, sit and then feel. Then you need to change this belief, right? Yes, I am the best Java developer, and every company is basically calling me and ready to offer me a job, because
These Java developers are always in demand, and every company is looking for best Java developers, and every company is looking for me to believe. Thoughts. So basically you need to change thoughts, correct? So start thinking like that, how I can improve into a Java developer side, right? Then is basically, yes, I am able to do that, particularly clear the interviews, right? So I need to prepare. So these are things I need to prepare, and I am preparing it, correct? So you need to change the thoughts accordingly. So many such thoughts you are getting it automatically. If you change the belief, right, your thoughts will be getting changed automatically. But you also need to change your thoughts, correct? So positive thoughts. So what are the preparations? These are the preparations I need to do it if I am joining in any company, related to my documents, related to my technical skills, related to my behavioral skills, related to my communication skills. So these things I'm preparing it, right? And that I'm continuously preparing. People are appreciating it, right? So, and these many more things I need to prepare it. So I'm still continuing doing, and you can say preparation side. Then if you have these beliefs, if you have thoughts and feeling like that, automatically you will take an action. So if you have these thought and beliefs and actions, these are at your internal mindset level, but actually you also need to do some work. So for action, what you are basically, you will do it, right? So you need to set up a plan, right? So basically keep all documents ready, right? When you are giving signing of an agreement, or you can say offer letter, right? Then start doing practice, right? Practice for Java, right? Then Spring Boot, right? Spring, JPA, like this. Interview preparation, right? Coding questions, right? These are basically some uh, action you will take it, correct? Applying for an interview, right? So that basically you are just doing these things. So majorly for your, this is will be an action here, right? Connecting to on LinkedIn, right? And sending a resume. This will be your action. Okay. So this will be an action here. Beliefs, I already told you, right? What are the beliefs and feelings you should have, correct? So this is a basically action part here. So like this, once you do this, right? Correct. Solving problems for others, right? Java problems. So Java problems interact into a Stack Overflow, interact into a different groups, communities, solve and help to others to understand the problems like this, right? So this is the way you Java experts are doing, correct? Many such times now I just heard that Twitter has also some community where people are responding in very quickly, right? On Facebook, LinkedIn, and many such places, Stack Overflow. So like this, if you behave like a Java expert, you will start solving others people's problem, correct? Participating, right? In discussions, correct? Certificate preparation, let's say for AWS, right? OCA, like this. So these, if you are really wanted to claim Java developer, maybe you must have cleared that OCA, right? Oracle certified, right? Associate certification, maybe for Java 8 or 11, like this. So this kind of action these Java experts are taking, basically, especially these three, right? So if you are talking about particularly interview preparations, this will be, you will do it, correct? For applying an interview and connecting on LinkedIn, it will give and you will get some call letters like that. So this is the way you will take an action, right? Feeling, I told you, right, how you can change your feeling. So start feeling like this, convert the feeling. First, you need to change the belief, right? So belief is market is open, right? And there are
many openings are there at my experience level, right? Then I am a best Java developer, right? I love Java coding, right? I am enjoying helping others for Java problems, right? So this is a basically a, you need to have these beliefs, multiple, you need to repeat these statements, right? So best Java developer, I love Java coding, I'm enjoying, right? I love solving an errors, right? Like this. So basically this is a you need to have a thoughts, right? In the thoughts, accordingly you can tune the thoughts. Feeling I already tuned, right? So this is a majorly you need to work on these beliefs, right? Feeling and these things I have already demonstrated. Based on that, you start working on it. Correct. So action I have already given it to you. Beliefs, these things you need to change it, right? Correct. And feelings and thoughts we have discussed. So you need to work on these 4 areas. Automatically you will attract that whatever you have decided. Now one more thing is that you get and download one of the offer letter, right? For manifestation. Manifestation, right? I guess this spelling is not correct. So manifestation is basically you need to do, so download one offer letter from your Google or somewhere, right? Don't put any company name and fill your yearly package, right? This much package I am getting on this date. Make it as a realistic date here. Let's say 2 months or 3 months or whatever it is, or whatever you are feeling it, whenever you are applying it. So, and start visualizing that you are getting it in your mail, or maybe you can send that offer letter from your mail to your mail also, and see you are getting this mail from someone else, and one of that HR is sending this offer letter to you, and download this offer letter also and put it in your somewhere in your what we can say in the laptop, and visualize it that you already got it. Correct. So many people are using manifestation techniques. Some of the very successful people into sports, they visualize that entire event, right? The match and everything, and the things happens in such a way, because this entire universe works on the frequency. So if you have this, everything is work on the frequencies. This entire universe is basically demonstrated on the frequency only. Maybe you have seen that Tesla. If you can just search for Tesla and the concept of a frequency, you will get some idea. So you will basically, जब भी तुम वो उनको देखना है, right? तो it's a basically visual. So the visuals, if you have any multiple times, you will see and feel like that you already got an offer letter and I'm joining, right? So, and I'm already joining here. I'm ready for my documents. I already sent the documents, and you can fill that this offer letter with that yearly package. Make it as a little genuine here, right? As per that 1.5 year, 2 years experience, people are taking, let's say 6 lakhs, 7 lakh or 8, whatever it is, like this. Don't put it like 12 lakhs, 14 lakh, 15 lakhs here. Make it as a genuine, correct? And you will see somehow you will get from somewhere else, you will get an offer, or maybe you will get a call letter, or from maybe in some other community somebody has forwarded your resume, and then you can get it nearby close, or maybe in the same amount, like this. Correct. Many such people have used this into for job, and the same techniques at multiple place. Okay, so it is proven technique, right? You can search for manifestation techniques, right? How to manifest my job here. You can search into a Google, you will get some idea here. Correct. So mindset level, these things you need it. Technically, definitely these preparations are required, but
also you need to use that as a law of attraction, the concept. Correct? I hope you got the point.